purpose of drafting any law goes beyond the legalese itself. The first is to focus attention on an issue that requires action by society as a whole and ideally by the government. So the first objective is being accomplished through all of you, that is to raise awareness that there is an urgent problem in our society. We are not talking one incident, we are talking a dozen, 14, 15 incidents in the last couple of years which require a response by society and which the political leadership of this country should be tackling. Ideally, the government should have initiated this. They have not done so. We are offering them something. Secondly, I would argue, indeed, as has already been said by Manoj Jha, that once you pass a law, society has to accommodate itself to the law, and social movements occur that follow through with the law. A number of practices, for example, that are now routine in the Hindu community were considered extremely bold and shocking in 1956 when the Hindu Code Bill was presented to Parliament. Thirdly, I would go even beyond this and say the law alone is not enough. Ultimately, the implementation of the law matters far more than passing a law. Even if tomorrow this law were passed, if at every level within the state system machinery, even the district magistrate level, the chief of police level, the local SHO level, there is indifference to these provisions, then our society simply will not be able to get rid of this kind of practice. So the importance of the law the importance of this draft is to focus attention, raise consciousness, promote the adoption of legality, but ultimately let society itself change to a point where you cannot avoid implementing these provisions. Send it to our state governments and encourage them to adopt a similar law in their states. I agree with you. Your question implies when you say 31% versus 35%, and I understand you are quoting me, but it implies from your end that the Prime Minister won't pass the law. Now see, I'm not so cynical on the Prime Minister. He's a very considerate man. I mean, it takes special consideration to be bothered about fires in Portugal, to be bothered about some whale in Africa. So why do you think he won't be bothered about his fellow citizens being lynched in India? I mean, he's cried 3 times about it. So I'm sure he will do it. No, I'm not laughing, it's serious. So I'm sure the Prime Minister will do it. So it's not 35 versus 31. I think it's 35 plus 31. I'm quite sure of the Prime Minister. But more importantly, to your second part of the question, see, we've only, on the 5th of last month, we got this law out in public domain through the drafting committee. And since then, Swara Bhaskar has put the petition to the Honorable Prime Minister. He's been busy traveling across the world and, so he's not had time to meet us. But we're sure he'll call us and meet us. But be that as that may be, we are hoping that this becomes a central law with the state governments having to have an enabling law. However, part of our plan is to meet chief ministers of various states from opposition as well as the ruling party. We will be seeking time from the Honorable Chief Minister of Delhi, for example, or Kerala, or even the Congress ruled states, and go and present our law to them. Ultimately, it's not us who will make the law, it is Parliament who will pass the law and state assemblies. So we're very well aware of that, and we are going to go and meet with them and also discuss this issue with them. Fortunately, these states, Kerala and Tripura, are by and large not affected by this menace of mob lynching. And this is not such a serious issue in our states, and we have been able to counter and tackle these forces even with the existing laws. Still, we will be open to this model bill. And one more, let me add: this issue is not being discussed within our country. Even outside, this has become an issue. Only day before yesterday, New York Times has wrote an editorial condemning this the culture of mob lynching. I think 2 weeks back, The Economist had carried an article referring to the incidents of mob lynching in India. So this has wider implications. This issue has wider implications, and this is very important to address this issue. That is why the initiative, that is why we are supporting this initiative. It has 50 states with a very federal system. The Americans wanted a federal law, and Senate blocked that law for 100 years. And there were 4,500 lynchings in those 100 years. Then in 2005, the American Senate apologized publicly. We can bring one state law here, there, where it's not an issue. That is not the point. Delhi government doesn't have law and order, but they passed a resolution, sent it to the LG. Now the Prime Minister has to act on that also. So people have already started taking it up federally. But the federal law has to come from Parliament, like it was done in America, and therefore we are now giving opportunity to the Prime Minister,
We do not have the same cynicism as you have. I hope the Prime Minister calls us. He can take this as a starting draft. And just be Yeah. practical. And of course. But I think that the Prime Minister will listen to voice of reason coming from everywhere. इसके पहले हमने जो ड्राफ्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दिया, इसका स्टैम्प भी है हमारे पास। हम नहीं चाहते कि हम कोई कदम उठाए, हम इसकी मांग करें। हम सिर्फ एक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर व्यस्त थे, हमने सिर्फ एक प्रयास किया है। हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इस लॉ को पारित करें। हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसका इनिशिएटिव ले। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी बड़े दयालु इंसान है, पोर्चुगल के बारे में सोचते, अफ्रीका के बारे में सोचते। तो हम जानते इंडिया में आकर वो रोते भी, तो हम जानते कि वो कुछ करेंगे। तो अब मन की बात अगर वो बंद करते, काम की बात करें। ये जो कानून है इसे स्टार्टिंग पॉइंट लेकर इस पर कुछ इसे बेहतर करें, हमें बुलाए, हमसे डिबेट करें। हमारा कोई रोल ही नहीं होगा। पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर है, इनसे डिबेट करें। अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट को पास करना है। जैसे भाई साहब ने ठीक कहा कि नंबर्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये सवाल आप प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ लीजिए कि कब वो हमें बुला रहे। पेटिशन उनके पास आ गया और वो हिंदुस्तान के कुछ दिनों के लिए। शंभू जी, मैं जवाब देता हूँ। तो जब प्राइम मिनिस्टर जी रो रहे थे वो राजनीति थी? जब प्राइम मिनिस्टर मोशे साहब से मिले तो वो राजनीति थी? हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस बिल को एक बार देख ले। शंभू जी, अगर राजनीति इतनी संवेदनशील हो जाए, एक भीड़ किसी का कत्ल कर दे और एक मुख्यमंत्री कहे कि हृदयाघात से मौत हुई है, अगर राजनीति इतनी ज्यादा संजीदगी से बढ़ जाए, मैं समझता हूँ राजनीति के लिए भी भविष्य बहुत अच्छा है। लोग ऐसी राजनीति नहीं कर रहे हैं आजकल। अक्सर चुनावी मशीन बन के हम ला गए हैं। कम से कम ये चुनाव से अतिरिक्त बात हो रही है। तो दलों को भी क्रेडिट दीजिए और सबसे ज्यादा क्रेडिट आवाम, सिविल सोसाइटी को। सबको इकट्ठा किया और कहा हुजूर चुनाव के अलावा भी कुछ मुद्दों पर एक साथ आइए। और अगर ये हत्याएं बंद हो जाए, Maybe I would like to give it. The voice of the people grow higher and higher. The political leadership may come out with a solution or may put an end to the activities of their own men. They need not pass the law. All we want is that this mob lynching should not be there in the country. The country should be peaceful. Everybody should be allowed to follow their own wishes. They should not be asked to eat this and or how to dress this or to go beyond this girl or that girl. This is not the way. See, one event I will tell you in Uttar Pradesh. There was a resolution by a small village panchayat stating that women, children should not speak on a mobile phone outside the house. Yes. This is not the way to treat our citizens. They have every right to do. This is a kind of psychological mob lynching. This is killing the spirit of the girl. Which means if she is allowed to go out and speak on a mobile phone, she may speak to a boy. This kind of thing is promoted, supported by a specific political group. If the political group sees that the people as a whole are against this, they themselves may stop this. जब हम खुद कह रहे हैं कि ये कानून भीड़ तंत्र के द्वारा अपना कानून हाथ में लेके किसी को भी मारने के खिलाफ है, उसका रिश्ता किसी धर्म से या जाति से नहीं है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया, एकलाख को भी मारा, ऊना के दलितों को भी मारा, सिख को भी मारा, हिंदू को भी मारा। तो ये भीड़ तंत्र की जो गुंडागर्दी है, मूलतः ये कानून उसके खिलाफ है। इस पे कोई पार्टी क्या किसके ऊपर आरोप लगाती है महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के बारे में क्या कहती है, कांग्रेस बीजेपी के बारे में क्या कहती है, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आज जिस प्रकार से हिंसा का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेके, नफरत फैला के कहीं भी 100 लोग इकट्ठा होकर किसी को भी पकड़ के मार दे रहे हैं, ये खतरनाक बात है। और ये सिर्फ गाय के नाम पे नहीं हो रहा है, एंटी रोमियो के नाम पे कभी हो रहा है, कभी लव जिहाद के नाम पे हो रहा है, कभी गाय के नाम पे हो रहा है, कभी मंदिर के नाम पे हो रहा है। ये प्रवृत्ति जो बढ़ रही है देश भर में, इसके खिलाफ ये कानून है। और लोकपाल का जिक्र आपने किया, लोकपाल में तो पिछले 3 साल से खुद ही प्रधानमंत्री जी खामोश चुपचाप बैठे हुए हैं। तो सवाल उनसे होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। क्या ये ट्रेंड लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो दल है उनके राज्य सरकारें जहां हैं, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले आ रहे हैं? नहीं, ये खुली किताब है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। जब सत्ता
खामोश रहती है ऐसी घटनाओं पर। अगर राजस्थान में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार खामोश है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है सरकार खामोश है, देश के प्रधानमंत्री जी खामोश है, जब देश में कुछ बवाल होने लगता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू होता है, नॉट इन माय नेम शुरू होता है, तब प्रधानमंत्री जी का साबरमती आश्रम से एक बयान आ जाता है। तो ये आप टाइमिंग देखिए, ऊना के दलितों के खिलाफ जब मामला पूरे देश में उठा तो उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे मार दो, दलितों को मत मारो, गौरक्षा के नाम पे मारपीट मत करो। तो यह टाइमिंग देखिए, उनकी शोक, उनकी संवेदना, उनके तकलीफ, उनके दुख, उनके दर्द का एक समय होता है, उस समय पे वो जाहिर करते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का मूक समर्थन ये गौरक्षा के नाम पर देश भर में हिंसा फैलाने वालों को है।